Hi guys, it's Justin Singh. It's the first time I'm doing a video like this, so I actually don't know what to do. But anyways, we're here at B&D Race Wars, which is Delhi's biggest autocross. And I'm not driving, and I'm happy that I'm not driving because it's stressful. But we're going to see what this event's all about. Go see all the cars, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, talk about their builds. What is autocross all about? You can see someone trying to drift and उसकी गाड़ी drift हो नहीं रही है. But he's trying. LSD नहीं होता तो गाड़ी drift नहीं होती. But anyways, I'll see you when I'm interviewing people. That's called one wheel peel. You don't have an LSD. One wheel spins very fast and the car stays there. I don't know why he's doing that, but you can smell the burnt rubber. That, my friend, is a drift because he's welded the rear differential. I don't know if you can hear it in the video, but you can hear the intake noise of the supercharger. That's a compressor, C-Class. I don't know the model number. I'm not a Mercedes this, but it looks so much better than one wheel peel like in the 5 Series, the G Series type. अब हम किसके साथ हैं? अपना नाम बताइए. मेरा नाम मुस्कान जुब्बल है. Muskan Jubbal is a car racer. What are you doing here? मजे कर रहे हैं. थार चलाओगे तुम? For now, yes. I don't think that will perform very well in the autocross. It is performing very well in terms of AC. Because Yeah, guys, it's very hot and we hate being here, but we do it for the love of the sport. Anyways, tell me which car are you actually driving? I'm driving the BMW M340i. How much horsepower does it take? See, she doesn't even know. She doesn't even know. She's 17 years old. She's driving a 1 crore rupee car and she doesn't even know how much horsepower she has. 389. Even I don't know. I think it's 380, something like that. So maybe it's first time we are and she'll be driving it for the very first time today. That's her mom, and she has given her a 340i, and she's only 17 years old. You'll never see this anywhere in the world. मेरी मम्मी मेरी वर्टेस नहीं देती मेरे को चलाने के लिए, लगता है मैं ठोक दूंगा. अरे आज वो happy Daughter's Day ना, so how can I see Close enough. that is like a speculation. It makes 375 horsepower, guys. That's close enough. I think we should play this game with everyone and ask them कि आपकी गाड़ी कितनी horsepower बनाती है and see how close they are. Engine CC. कितना सीसी का इंजन है? बहुत सिंपल है. 1889. I thought an answer like 3 liter. अच्छा, इंजन का नाम क्या है? बहुत पॉपुलर इंजन है. अच्छा, पता नहीं, हुड खुल के देखा नहीं. इंजन का नाम? BMW. गाड़ी का नाम नहीं, इंजन का नाम. It's a BMW B58. अच्छा, Yeah. आज गाड़ी हमें मिलेगी फर्स्ट टाइम. पूछ क्यों? क्योंकि उसके बाद M4 आ गई. उसके पास M4 नहीं M4C आ गई है. M4C माने? What do you mean by C? Competition. Not the other C. कुछ हमें सिखा रहे हैं. Okay, so I will see you when you're in your car now. Yes. So that we can show off your Okay, yes. new car. We changed the wrap of it, so it's I saw the grey wrap. It looked like a banged up car. The white bonnet and it looked like a drift missile. because it was banged up. Yeah, जी बोर हो गया उससे तो तुम्हें दे दी. It was Galaxy, then it had a white border and then found Galaxy, and now it's satin dark grey, which was pretty sweet. I saw it. Looks nice. Very German. ठीक है. We shall catch you when you're driving. What's your aim for today? Just to have fun. No competition. You're not competitive. I am competitive, but right now my exams are going on, so this is more of like a stress reliever. In classes right now, so she'll be studying it. I literally have an exam day after tomorrow. My entire life depends on it क्योंकि उसके basis पे predictive लगेंगे and then उसके basis पे I have to get in, like apply for colleges and उसके basis पे then I'll get into the colleges. See guys, she's so studious. जब मैं स्कूल में था तो मेरे को पता भी नहीं होता था कि मेरा एक दिन पहले की सिलेबस क्या है. हम हैं शिवेक त्यागी के साथ.
क्या हाल है ब्रोस? मैं बहुत अच्छा हूँ। अपनी गाड़ी के बारे में बताइए फिर। यार ये हमने जस्ट अभी गाड़ी बनाई है 4 महीने पहले, तो ट्रैक डे पे इसका इंजन फट गया था। हाँ देन वी डिसाइडेड टू टर्न इनटू अ रेस कार। तो हमने इसमें नया इंजन डाला है, ठीक है, जो इंजन ऑलमोस्ट 5-7,000 किलोमीटर चला हुआ है। इसके अंदर हमने थोड़ी सी कूलिंग के अंदर बढ़ाया है। ये 1.2 है 1 लीटर 1 लीटर TSI 1 मैनुअल। लीटर TSI मैनुअल। हाँ, तो इसके अंदर हमने सस्पेंशन में थोड़ी लोडिंग करी है और अपने कस्टम स्टड बार्स बनाए हैं। कैसा लग रहा है अभी, मतलब स्ट्रेस है थोड़ा? नहीं, पहला लैप है, ठीक है। नहीं, थोड़ा तो स्ट्रेस होता है ना आज, मतलब वो है थोड़ा दूसरे नर्व्स होती है। अब आप इसके अंदर क्या होगा कि जैसे ये इनके रेस इंजीनियर है ना? Hi. Right? Yes. You're the race engineer, right? Yes. So these guys are going to work on this car. And what category? right now C11. I don't even know what that means. above But above 1650. Yes, तो जीतना बता है। दो। जीतेंगे और क्या जीतना देख है? के बोल दो जीतना है। जीतना है, जीतने आए हाँ, बोल दो जीतना है। हाँ जीतना है भाई। ठीक है। जीतना है। जीतना है। हमने 2 लोगों से बात करी है। अभी मोस्टली सब बहुत बिजी है। दिस टाइम ऑफ द ऑटोक्रॉस इट्स 12:30 and people are usually full of nerves. See, in North India the thing is we don't have racing events. Most of the people this is a very big deal for. सबके लिए बहुत अहमियत रखता है ये इवेंट because this is the only place where you can come and show your car and your driving. And so everyone has lots of nerves. It's about your pride, it's about your car, it's about your self-confidence. And everyone's going इधर उधर टायर बदलवाओ अपनी गाड़ी के. These are all stock cars. They drive them on the road, modified, but stock cars only. I think 1 or 2 only full-blown race cars with a cage and a race seat. Some people have very interesting cars. More than supercars, I find all these shit boxes interesting. There's this Ritz PSR वालों की है. क्या कर रखा है आपने इसमें? क्या कर रखा है इसमें? इस गाड़ी के अंदर यार ब्रो हमने पहले तो वेट रिडक्शन करा है, हाँ. इसका इंजन रिबिल्ड करा था, बोर्ड पॉलिश करा था और इसके अंदर 2-3 कस्टम स्टड डाले। फुल देसी का. In house. इन हाउस। पता चलेगा कि उस जगह पे दिक्कत है तो फिर आगे पैसा लगाएगा ना। मैं पहले वो ले आऊँ, कोई चीज का फायदा नहीं। 2 टाइप के रेसर होते हैं. एक होते हैं जो फुल गाड़ी बना के आते हैं, हाँ। स्क्रैचलेस, ठीक है, अंदर से साफ सूफ एक लैप मार के आ जाएंगे बूम करके. And then हमारी होते हैं गाड़ी हमारे नहीं जैसे. खत्म करती। हमारी गाड़ी कभी नहीं बनती, ठीक है, कभी नहीं बनेगी. 10 साल और लग जाएंगे, कभी नहीं बनेगी, कभी नहीं। ठीक है. हमें चुभता भी है कि हाँ हमारी गाड़ी में थोड़ी सी धूल है, वो भी नहीं होनी चाहिए, बट हमेशा रहेगी. हाँ, मैं नहीं साफ कर पाता यार। मैं नहीं कर पाता. मैंने सुबह धोई थी, फिर पता नहीं कहाँ से बस हो गया. आ जाता है. हाँ बट देखो, गाड़ी का पर्पस जो है ना, हाँ. वो रेस करना है। रेस तो अगर मेरी गाड़ी मैकेनिकली सही है, लुक से क्या फर्क हाँ, पड़ता है? मुझे तो आवाज से भी नहीं फर्क पड़ता। नहीं पड़ता. कड़कड़ अगर आवाज कड़कड़ हो नहीं आ रही, अगर गाड़ी की आवाज में कड़कड़ नहीं है तो वो रेस कार ही नहीं मुझे है. कुछ नहीं फर्क पड़ता। देखो, जब तक कोई मेरा पार्ट ना बोल रहा हो ना, हाँ आपस में लोहा टकराता रहे, हाँ. क्या दिक्कत है? क्या हो गया? जब तक टाइम आ रहा है, एटलीस्ट दैट्स व्हाट मैटर्स. जब तक टाइम आ रहा है, जब तक टाइम आ रहा है यार, देखो। ड्राइविंग फन. हाँ, आपको क्या रेस के अंदर गाड़ी का क्या काम है? टाइम निकालना है। टाइम निकालना. अगर आपकी गाड़ी टाइम निकालनी है तो आपका पर्पस सॉल्व है नाउ। आपका मन है उसे सुंदर करो, ये करो, वो आपकी टोटल जैसे वो अपनी देखो choice है। सुंदर गाड़ी. वो देखो सुंदर गाड़ी, वो हर साल रैप बदलती है। सबसे सुंदर दिखने वाली। और उस गाड़ी के बारे में आपको टूर का, इस गाड़ी में बड़ा फर्क है। ये लो. नहीं वो कुछ भाई, कुछ भाई अपनी गाड़ी का टूर कराइए। टूर चाहिए हम आपकी गाड़ी का. कार टूर। कार टूर. अभी वीडियो बिजी हो? बनाइए गाड़ी की। वीडियो बनानी है। हाँ बिजी हो अभी? साफ मत करने लगी हो अभी। एक रन तो मारो फिर बनाते हैं। चलो ठीक है, रन मारो. ये पकड़ लो। देखा, अभी सब बहुत बिजी होते हैं, सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, स्ट्रेस होता है. स्ट्रेस होते है, स्ट्रेस खड़ा होता नहीं है. रहेगा। खड़ा नहीं रह सकता. कुछ ना कुछ गाड़ी में हमेशा काम होता रहना चाहिए, वरना एज अ ड्राइवर यू गेट फक्ड इन द हेड. गाइस, अब हमने छोड़ दिया है इस इवेंट को कवर करना कि मेरे को बहुत गर्मी लगती है. एंड इफ़ आई एम नॉट रेसिंग देन आई एम अ वेरी सेंसिटिव गाय. इफ़ आई एम रेसिंग देन आई डोंट केयर. बट अभी आई एम नॉट रेसिंग, तो आई एम गोइंग टू गो सिट इन द कार with AC full blast and drink water. Thing about autocross events is the range of cars you have. यहाँ पे अगर आप आओगे, there's a Brezza like that. Got I won't comment on how it looks, but you got an Isuzu with the fattest tires ever. ठीक है, full pickup truck. Then next to that you have a 325i drift missile kind of, build.
Yankee as it's being built. उसके पास you have an M3, very nice looking car. Then you have got another off-roader, and then you've got this 340i standing, and between that you've got all these normal looking cars. ये i10 है. This is competing, and along with all these other cars also. So it's a spread of cars. You have so many different kinds of people coming in, and किसी की M2 comp है, किसी की stock Altis है, lifted Jimny, another stock City. This looks like stock only, a 330i. All these cars are competing. And then look at that car. इसके टायर देखो. मैंने इससे ज़्यादा चौड़े टायर नहीं देखा अपनी लाइफ में. At least on a new car. But then you got cars like this. डिक्की भी नहीं लगी गाड़ी में. And the diffs welded. So both the tires move together, so you can hear the cut noise coming. Built for drifting, and right next to that very nascent stage 325 where you've got a fully built with all the lights and all. Takiya's 330i. So it's a spread of cars. It's all the different kind of cars. Look at this Honda. It looks so clean. Got some really nice looking cars. It's just some place you want to come. And even if you want to watch, you can come here and watch. You don't have to pay. If after 12, I think, spectators are allowed. But generally, no, any autocross, the good thing is you can come, watch, enjoy, drive i10, or you can drive your M2. It doesn't matter. It's all about having fun. So, this guy, his name is Achintya Mehrotra. yeah, and he drives the. If you look at, मतलब बाहर से देखोगे आप, let me switch to it. बाहर से देखोगे, it looks like a normal Ignis, and he has an i20 N9. All these cars are look, मतलब comparatively to all the M3s and M4s and all that, much more powerful cars. You'd think they're faster, but this guy is most of the time the fastest guy around here, and I think he has lots of knowledge and all that maybe other people don't have, and they just go for power. And actually, he also has a company. It's called AM Racing. yeah. So tell them about your company. So I am the proprietor of AM Racing. It was established in 2016 August, and we are pan-India distributors or sole importers for suspension brands like Cobra, KYB, Tanabe, Pixel Brakes, HPI air filters. We used to do NK wheels. We do HPI Japan air filters. Yeah. So that's some of. So he's got all the full shebang if you want to get your car lowered and on nice N keys like those ones. We'll show them in the video. It'll be there in the video. But so what's the plan for today? Like, what's your aim? Aim is to compete with the fastest driver and the car, which So, like, which cars are you competing with? the Porsche only. Porsche. He's competing with a 718, right? Yeah. The blue one. Blue 718. He's going to be competing in which car? This one or that one? Both, but I think the Ignis would be quicker of the two. This is an Ignis. Had some work done to it, but still going up against 718, it's a big deal. So all cheers to this guy. No worries. Thanks a lot. North India में problem क्या है? Everybody's got money. Everybody wants to show off. Knowledge is not there. You need people with more knowledge. This guy is one of them. Someone's winning with the smallest engines and lightest cars. That's a driver. Because it's interesting to see all these big cars going around. But जो एक well set up गाड़ी होती है, even if you have an Ignis, you can go up against Porsches and much bigger cars. In an autocross, it's a tight circuit. It's a very tight circuit. You don't need horsepower. You need good setup, good skill. हाँ जी, अब हमारे पास है मिस्टर गुरजोत सिंह। गुरजोत इज वेरी फेमस इन दिल्ली। इनकी सिलेंसर हाउस नाम की दुकान है। आधे से ज़्यादा जो दिल्ली के सिलेंसर है इन्होंने नहीं बदले हैं। He drives a Polo. Yes, Polo 1 liter. And what all has been done to that? Stage 2 remap, पूरे stage 2 tune. गाड़ी दिखाना अभी बात। And he is also always competing at the top. कौन सी गाड़ियों से तेज टाइम मार लेते हो? अभी तो चल रहा है, अभी Porsche से हार रहे हैं, देखते हैं शाम Porsche से हार रहे हैं पोलो में। देखो ऑटोक्रॉस में सारी लाइंस ब्लर हो जाती है। यू कैन हैव अ पोलो और एन इग्निस एंड स्टिल कम्पीट विद 718, बट एक नॉलेज, एक स्किल जो होती है दैट कम्स ओवर द इयर्स। एवरीबॉडी स्टार्ट समवेयर, दैट्स द थिंग। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग।
एंड अगर आपको एग्जॉस्ट बनवाना है और आप दिल्ली में रहते हो या फरीदाबाद या गुड़गांव में तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आपको चाहिए हो हम शिपिंग भी कर देंगे अभी मेरा भी बनाने वाला जिप्सी का है ना बिल्कुल थैंक यू सो टेल मी अबाउट योर कार Okay, so I'm driving the M4 competition and my M340 X drive. He used to drive an M340i, now he's on M4 competition and he's drifting the fuck out of it. है ना? Yeah. Trying to. He's doing an amazing job. मैंने देखा है पूरा. It looks like a set-up drift car. That's how this car drifts. Tell us about yourself. What are you've done? Okay, so I've been into motorsport for the past 6 years, and I've been a national karting champion, and I've been a national autocross champion, and I've taken part in the International Gymkhana Asia Pacific Motorsport Championship as well. And he's a national champion. Yeah, and we got third for India, second runner-up, and yeah, and I just love drifting, rallying, and I'm just into the car scene. Which car did you start in? So I started with a Swift 1.2 liter. Swift, and now he's driving a car with probably 6 times the horsepower. Yeah, On a dyno. yeah. If you tune it properly, yeah, 7 times more horsepower. 7 times more Yeah. horsepower. Yeah, it's pretty. Rock ही छोड़ दे भाई, बहुत है. और चाहिए? Yeah, obviously. 510 है डायनो पे डालेगा तो भी 510 निकालेगी व्हील पे. हाँ तो ये वैसे अंडररेट करके we दे. need 680 horsepower more. Why? Just cause we're car guys, man. Yeah, it's just it never stops. Yeah. Never stops. Never stop. Started with Swift, he's on an M4 competition now, so you know he'll never stop. अगली बुगाटी की रेस कार बनाएगा. Obviously. ये गाड़ी मेरे सामने बनी थी. It's a E36 318 or 16i originally. Fucking slow car originally, but good looking car, great chassis E36. The chassis is known worldwide. This has a 2JZ from a Toyota Crown or something, I don't know. It was actually built in front of me in Bangalore in Speedworks. Shout out to Sid from Speedworks. He's also my tuner for my race cars. But yeah, it's amazing to see all these new cars coming with. It all used to be 325i's and 330i's. Now we've graduated to two drift cars, M4 Jazzy की और Jahan की original 318i, which has been 2JZ swapped, and it is yet to run now. So all the best to him. So that's a wrap. That's B&D Race Force. This is Delhi's premier autocross and drifting and car show. It's all in one. The atmosphere is amazing. You've got all sorts of cars, pickup trucks, race cars and autocross builds, stock cars, drift cars, everything. So it's the place to be if you're a gearhead. And if you want to know more about the cars, how they're built, then keep on following the channel and I'll see you later.